Welcome friends. Today we are taking some of the properties of congruent chords. Congruent chords जो है उसकी हम क्या आज प्रॉपर्टी देखने वाले हैं. What that property says? Congruent chords of a circle are equidistant from the center of a circle. So for that it is necessary to draw a circle that we are drawing here. See here, this is the circle. This is the circle and the two chords are there. Chord AB and another chord is given here, that is the CD. And this is the center P. Congruent chords. These two chords are, how are these? These are the congruent chords. Means their lengths are the same. उनकी लेंथ जो है कैसे रहेंगी, सेम रहेंगी. नाउ वी आर ड्रॉन द परपेंडिकुलर हियर, दिस वन एंड दिस, एंड वी हैव टू प्रूव दैट द पी एन इज इक्वल टू पी एम. ये हमको प्रूव करना है. सी हियर, जो जो दिया है सब लिखेंगे हम. वी आर राइटिंग द ऑल द गिवन क्वांटिटीज राइट हियर. वी आर गिवन अ सर्कल विद द सेंटर पी. with center P. After that, chord AB is congruent with chord CD. Congruent chords are given. This is the first which was given to us. The second is chord AB is congruent with chord CD. ये हमको दिया गया है. After that, chords are these PM perpendicular to the chord AB. This PM perpendicular to the chord AB. And this is the N is here. We are given PM, segment PM is perpendicular to the chord AB. It means M lies between A and B. It is M is in between A and B. In the same way, we are also given PN perpendicular to the CD. Segment PN perpendicular to the chord AB. In the same way, PN is perpendicular to the chord CD, not AB. It is the CD is there. So N lies between C and D. N lies between C and D. That is the betweenness that we have already seen. What is the betweenness? Now see here what we have to prove. जो prove करना है हमको. This is to prove सेगमेंट पीएम इक्विडिस्टेंस है बताना है हमको. दिस टू chords are equidistant from center, means PM is congruent with the PN. So you can prove it. Segment, we have to prove this PM is congruent with segment PN. अभी इसके लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. वी हैव टू मेक द कंस्ट्रक्शन. सो राइट हियर कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ सेगमेंट PA, this one.
when we draw this dotted line, it means that it is a constructed pair, PA and PC. Draw segment. PA and PC. Now start the proof here. Very important proof. Segment AM is the half of AB. AB is the half of AB. Call it the statement number 1. ये देखेंगे सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए एम, ये जो है ये क्या है, इट इज द हाफ ऑफ ए बी. कैसा है ये, क्योंकि हमको मालूम है कि प्रॉपर्टी मालूम है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट कॉर्ड. मीन्स वी कैन राइट हियर इन द सेम वे segment CN, this is the half of CD. It is 2. So the reason is the same, so that we are writing here the reason. What is the reason? Reason is very necessary to write, so we are writing here. So the reason is perpendicular drawn from center of a circle to the chord of a circle bisect chord. इसको क्या ये bisect करता है. This is congruent with this as per this reason. Now see here AB is equal to CD, लेकिन हमको क्या दिया है, chord दिया है. AB is equal to CD. Given, we are given this AB is equal to CD, that we are given. So call it the statement number 3. That is the given, दिया है हमको ये. Reason is also necessary. It is given. So from 1 to 3, statement number 1 2 3, तो क्या हो जाएगा ये, AM is equal to CN. AM is equal to CN आ जाएगा. From 1 to 3, therefore the AM is equal to CN. It is from statement number 1 2 3. One, two, and the 3 is here. Now you consider the two triangle. अभी हमको क्या consider करना है? You have to consider the two triangles. Means which one? This one at first and this one. Both the triangles we have to consider. So consider here in triangle PMA. In triangle PMA and triangle PNC. Angle PMA, this one, angle PMA and PNC, that are equal to the 90 degree, क्योंकि it is a perpendicular. So we can write here angle PMA is congruent with angle PNC. So angle PMA is congruent with angle PNC, each is 90 degree, क्योंकि perpendicular है ये. Now in addition to that, this is congruent with this is congruent with this angle is congruent with this angle, perpendiculars are there, each is 90 degree, and after that the hypotenuse PA is congruent with hypotenuse BC. Is congruent with hypotenuse PC. Hypotenuse PC is here. Radii of the same circle. ये वाला जो hypotenuse है, this is congruent with this.
क्योंकि व्हाट इज द रीजन, दीज आर द रेडाई ऑफ द सर्कल, एक ही सर्कल के ये रेडियस है. सो यू कैन राइट हियर द रीजन, रेडाई ऑफ सर्कल. सेम सर्कल, radii of same circle. So the triangle and the side AM, साइड ए एम इज कॉन्ग्रुएंट विथ, अभी क्या क्या दिया हमने, ये तो 90 डिग्री है हमारे पास, हाइपोटेनियस है. आफ्टर दैट साइड ए एम इज कॉन्ग्रुएंट विथ साइड सी एन. कौन से भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंट है और एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, then at that time we generally apply hypotenuse side theorem. So it is from the statement number this one, AM is equal to Cn, ये हमने उसको क्या दिया है, it is the statement number 4. So you can write here from statement number 4. Therefore the two triangles are congruent. ए पी ए में जो हमने कंसीडर किया था इज कॉन्ग्रुएंट विथ अ ट्रायंगल पी एन सी बाय हाइपोटेनियस साइड थ्योरम. Therefore सेगमेंट पी एम, therefore जो बची हुई जो साइड है मीन्स दिस साइड एंड दिस साइड दैट विल गेट कॉन्ग्रुएंट. सो सेगमेंट पी एम is congruent with segment PN. It is by CACT, corresponding sides of a CACT, corresponding sides of a congruent triangle. यही हमको प्रूव करना था. Now you see the next question. रेडियस ऑफ अ सर्कल इज द 10 सेंटीमीटर. रेडियस कितना दिया है सर्कल का, इट इज गिवन इक्वल टू द 10 सेंटीमीटर. दिस इज द रेडियस वी आर गिवन. रेडियस ऑफ अ सर्कल इज गिवन 10 सेंटीमीटर. दिस इज द रेडियस P. We are given the radius, it is equal to 10 centimeter. There are the two chords of the length 16 centimeter. Chord जो दिए हमको, these are the two chords which we are given. These one chord is 16, another chord is also 16 centimeter. What will be the distance of this chord? ये chord का distance हमको क्या निकालना है. This is the perpendicular, this is the perpendicular. Now you write here the all the given quantities. जो जो दिया है सब लिखेंगे हम अभी. Write the given quantities. We are given circle with the center P. With a radius 10 centimeter. First given circle with the center P with the radius 10 centimeter. After that, chord AB is congruent with chord CD. Chord AB is congruent with chord CD.
और उनकी लेंथ भी उन्होंने दी है, ए बी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू सी डी मीन्स ए बी is equal to CD is equal to 16 centimeter that we are given, and PM is perpendicular to the chord AB दिया है उन्होंने. There are the two chords. What will be the distance of this chord? हमको मालूम है कि उसकी प्रॉपर्टी है PM, this one सेगमेंट PM जो हमने अभी प्रूफ देखा है उसी का ये एप्लीकेशन है. सेगमेंट PM is perpendicular to chord AB. AMB M lies between A and B, and in the same way PM perpendicular to chord AB, PN also perpendicular to chord CD. Perpendicular to chord CD. ये हमको दिया है. PN perpendicular to the chord CD, in the same way N lies between C and D. Here जो दिया है हमको, रेडियस इज गिवन, इट इज 10, ये 10 दिया है हमको 10 सेंटीमीटर. आफ्टर दैट दिस इज द कंप्लीट कॉर्ड की लेंथ दी है उन्होंने, इट इज इक्वल टू द 16 सेंटीमीटर. दिस वन इतना, ये भी उतनी है. सो क्या करना है हमको देखेंगे, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट PM एंड द PN. PM और PN हमको निकालना है. टू फाइंड आउट क्या निकालना है वो लिख रहे हैं अभी हम. इट इज द PM एंड द PN. PM और PN हमको निकालना है. Now solution is here next. PA is equal to 10 सेंटीमीटर दिया है हमको. PA is equal to 10 सेंटीमीटर. It is the radius of a circle. क्या है ये? It is the radius. Of a circle. After that PM perpendicular to the AB, this is given, PM perpendicular to the chord AB. PM perpendicular to chord AB. ये दिया है हमको, दिस इज द गिवन क्वांटिटी, क्योंकि हमने पहले ही लिखे है गिवन क्वांटिटीज में. आफ्टर दैट AM इज द हाफ ऑफ AB. AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. AM इज द हाफ ऑफ AB. AM कैसा है ये? इट इज द हाफ ऑफ AB, क्योंकि हमको मालूम है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट कॉर्ड, ये बराबर ये रहता है. Means it is the half of AB. So you can write the reason here, perpendicular distance drawn from center of a circle to the chord bisect chord. This is the reason, perpendicular distance drawn from center of a circle to the chord bisect chord. Now therefore AM is equal to half of AB. AB is given, AB हमको दिया है, it is equal to the 16. AB दिया है 16 सेंटीमीटर. So write here 16. So your answer is that will come here equal to the 8 सेंटीमीटर. AM कितना मिल गया हमको? This is the 8 सेंटीमीटर that we got here. It is the 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर that we got here. Now you consider the triangle. अभी ये वाला जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल AMP,
in triangle AMP or PMA. In triangle PMA, consider this triangle. In triangle PMA, this is right angle triangle is here, so you apply Pythagoras theorem. ट्रायंगल को क्या हम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. इन दैट PMA इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री. जो दिया ही है हमको, इट इज गिवन. So apply Pythagoras theorem to it. It is a AP square means hypotenuse square is equal to sum of the square of the other two sides. Means we can write here AP square E is equal to AM square plus of PM square. It is by Pythagoras theorem. It is by Pythagoras theorem. So keep here values. AP is given, radius is given 10 centimeters, 10 square. E is equal to AM जो अभी हमने निकाली है, इट इज द 8 स्क्वायर प्लस ऑफ PM स्क्वायर जो हमको निकालना है. सो मेक द स्क्वायर हियर. इट इज 100. E इज इक्वल टू 64 प्लस PM स्क्वायर. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PM स्क्वायर. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PM स्क्वायर. Therefore PM square E is equal to, इसको इधर ट्रांसफर कर लिया हमने, इट विल बी हियर 100 माइनस 64, इट इज इक्वल टू 36. PM square is equal to 36. Therefore taking the square root on both sides, so PM we will get here, it is equal to the 6 centimeter. स्क्वायर रूट हमको लेना है उसका. विल गेट द PM इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. और हमको मालूम है कि कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट विद कॉर्ड CD, बट वी नो दैट द कॉर्ड AB, हमको मालूम है कि कॉर्ड जो दिया है हमको, सो कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट विद कॉर्ड CD. इट इज गिवन. मीन्स PM इज इक्वल टू PN. PM बराबर PN रहेगा. इज इक्वल टू PN. PN की वैल्यू जितनी है उतनी वैल्यू, PM की वैल्यू जितनी है उतनी PN की रहेंगे. व्हाट इज द रीजन, जो अभी हमने प्रूफ में देखे है, इसके पहले वाले प्रूफ में देखे है, दैट इज द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर इन अ सर्कल. congruent chords equidistant from center. Means PN is equal to 6. See here, this is the question. Segment PM and the PN are congruent chords. दिया है हमको, these are the two congruent chords. And show that the ray PC, this is the ray PC, it is the angle bisector of the angle in PM. ये हमको प्रूव करना है. This is congruent with this. Now see here, given जो दिया है लिख डालेंगे हम पहले. You write all the given quantities at first. This is the best way to solve any question. A circle with the center C.
See, after that chord PM congruent with this PM. These are the two chords we are given. Chord PM, chord PM is congruent with chord PN. PM is congruent with chord PN, and we have to prove here. Ray PC bisects angle NPM. Angle NPM is here. Now you make the construction here. Construction करना है हमको. Very important question. Generally asked for the 3 marks. Draw segment CA. This is the segment CA. ये हमने पहले निकाल के रखा है. ड्रॉ CA perpendicular to the chord PM. And segment CB perpendicular to chord PN. Now start the proof here. Chord PM is congruent with chord PN. PM is congruent with chord PN, that is the given. दिया है हमको, write the given. After that CA is congruent with CB as per the property. CA is congruent with CB or equal with CB. CA is congruent with equal with CA is equal with the CB. That is the congruent chords are equidistant from the center. That is the reason. Statement number 1. Congruent chords are equidistant from center of a circle. So you consider the two triangle, this one and this one. दोनों भी triangle consider करेंगे अभी. Triangle PAC consider here in triangle PAC and triangle PBC. Angle PAC is equal to angle PBC. ये क्या है? ये congruent है. Each is 90 degree because these are the 90 degree.
each is 90 degree. So at the 90 degree there, it means that there will be the hypotenuse. Hypotenuse क्या रहेगा उसको? So the hypotenuse PC is congruent with hypotenuse PC, क्योंकि दोनों भी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस ये कैसा है, ये सेम है. दैट इज द कॉमन साइड, मीन्स कॉमन है ये. यू कैन राइट हियर द रीजन. कॉमन, दिस इज द कॉमन इज दिस. So segment CA, this one, CA is congruent with CB, that is from the statement number 1. Segment CA is congruent with segment CB from statement number 1. Therefore the triangle PAC and the PBC, हमको मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस कॉन्ग्रुएंट है, और कौन सी भी एक साइड यदि कॉन्ग्रुएंट रहती है, देन वी कैन अप्लाई दिस हाइपोटेन्यूस साइड थ्योरम. सो दिस इज अप्लीकेबल हियर. सो द ट्रायंगल PAC is congruent with the triangle PBC by hypotenuse side theorem or test. By hypotenuse side test. अभी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो रिमेनिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, रिमेनिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. देयरफॉर वी कैन राइट हियर द एंगल CPA is congruent with the angle CPB. It is by CACT, corresponding angles of congruent triangle. इसका मीनिंग क्या है? दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इट मीन्स दैट दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दिस एंड दिस. इट मीन्स दैट we can say that is nothing but the ray PC is the bisector of, or ray PC bisect the angle NPM. इसको ये क्या बाइसेक्ट करेंगे. सो वी आर टेकन दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Students, if you have any type of the question related with this, you can ask me in the comment box. I will always try to give your answer. Thank you very much.